Hey beauties, welcome back to my channel. I hope you all are doing great and are staying safe. It's been so long कि मैं कोई एक लॉन्ग वीडियो अपने चैनल पे लेके आई हूँ. But it's time. मैंने सोचा अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए एक लॉन्ग वीडियो तो बनता ही है. So fall is here and fall comes with fall 2025 makeup trends जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहे हैं रनवेज पे और आपने अपने इंस्टाग्राम फीड पे भी देखा होगा. So why not we're gonna try these trends and make it wearable on daily basis because honestly जो ये trends हैं these trends we can't wear it on daily basis. So we're gonna try each and every trend from fall 2025 and we're gonna make it wearable on daily basis. So without further delay, let's get into the video. So let's try our first trend, glossy skin finish. Fall is almost here and fall usually make your skin dull and dry. So it's the perfect time to try this trend. Runway always exaggerated it with super dewy look. But let me show you how you can work with this and wear it on daily basis. Always apply good hydrating moisturizer. And let it absorb for few seconds. You can clearly see the difference. Instantly आपके skin में एक glow आ गया है. Second tip is to mix your foundation with your highlighter to achieve that dewy look. सी मेरा पूरा बेस कितना ही ड्यूई कितना ही शाइनी लग रहा है. जो फाउंडेशन मैंने यूज किया था दैट वाज टोटली मैट. थर्ड टिप, always set your T-zone with powder so you don't look oily instead of dewy. So the last step is always focus on your high ends. Always apply highlighter on your high ends. ये आपके फेस को इंस्टेंटली लिफ्टेड लुक भी देगा और आपके जो हाई पॉइंट्स है उनको हाईलाइट भी करेगा. यू कैन क्लियरली सी दी डिफरेंस. मेरा टी जोन बिल्कुल मैटिफाई है बट जो मेरे फेस के हाई पॉइंट्स हैं लाइक चीक बोन नोज ऑफ द ब्रिज वो प्रॉपरली हाईलाइटेड है, डोई फिनिश दे रहा है. सो दिस इज द पावर ऑफ हाईलाइटिंग एंड सेटिंग योर बेस. So let's try our trend 2 in which we're gonna create an amazing eye look using this palette. This palette have lots of shades. इसमें cool tone, warm tone, neutral tones, shimmers सब हैं. But we specifically gonna use this warm tone colors to create our amazing eye look because we are trying trends of fall 2025 and fall is all about earthy colors, dark colors. Fall में ये colors बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं. And specifically if I talk about these orange color, burnt orange color, terracotta color, ये colors बहुत ज़्यादा trend पे है. And you might have seen on the runway models are wearing those beautiful smoky orange eye, but honestly we can't wear it on daily basis. So let's make these color wearable on daily basis and let's create an amazing eye look. Now we're gonna take this beautiful golden shimmer shade with the help of flat brush. So see,
कितना प्रिटी आई लुक निकल के आया है। वी जस्ट यूज 2 कलर्स एंड उन 2 कलर्स की हेल्प से कितना प्रिटी आई लुक निकल के आया है। एंड दिस लुक यू कैन वेयर इट ऑन डेली बेसिस, चाहे आप ऑफिस जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ये लुक बहुत ही प्यारा लगेगा, स्पेशली इफ यू हैव ब्राउन आइज। ब्राउन आइज पे अर्दी कलर्स बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगते हैं, तो अगर आप ये ऑरेंज कलर वाला लुक क्रिएट करते हैं तो आपके आइज बहुत ज्यादा ही प्रिटी लगने वाले हैं। So let's move to our trend third, in which we're gonna do our brows. That time has gone जब हम अपने brows को over draw करते थे, define करते थे. Fall is all about fluffy and natural brows. So let's do our brows. So you don't need to do anything. You just need a clear soap or a clear gel. उसको आपने अपने स्पूली में ऐसे लेना है and you simply need to brush your brows upwards. Simply need to just comb your brows upwards. See, दोनों ब्रोज में आपको डिफरेंस दिख ही रहा होगा। एंड हियर्स अ स्मॉल टिप फॉर यू, thick brows make your face look more youthful and young, so keep your brows natural and fluffy, don't overtry it. So let's try our trend fourth, statement lips. Fall is here and fall lips are getting bold with deep colors like plum, wine, brick red color, perfect for cozy winters and coffee shop selfie. So here we're gonna try 2 ways in which we're gonna wear this color. One is for your casual outing day-to-day basis, and second one when you are going out for a date or a movie night or something, when you want to feel sexy. So we are going to see 2 ways to wear this color. So in first case for day-to-day basis, हमें इसे हल्का सा swatch करना है अपने lips पे, and we're gonna dab it with fingers. दिस टेक्निक विल गिव यू इंस्टेंटली ब्लरी लुक। ऐसा भी नहीं लगेगा आपने लिप्स पे अपने कुछ बहुत ज्यादा हैवी पहना है, स्टिल यू गेट दिस ब्यूटीफुल स्टेन ऑन योर लिप्स. So for second case, we're gonna use a dark lip liner to outline our lips. This will automatically enhance our lips and we're gonna go bold with this color. क्लियरली सी दी डिफरेंस, पहले एकदम न्यूट्रल ब्लरी लग रहे थे, अभी मेरे लिप्स बहुत ज्यादा शार्पन लग रहे हैं. नाउ वी गोना यूज द सेम लिप कलर बट दिस टाइम थोड़ा ज्यादा. Well, you can clearly see the difference. First look बहुत ही ज्यादा soft and blurry थी और ये कितनी ही bold and sharpened look है. This lips is perfect for your special date nights when you are going out and want to feel a little sexy. It's the perfect. Here's a small tip. If bold lip scares you, just balance out with mascara and liner. That's it. Don't go heavy with your makeup. In this way, your lips will gonna stay the star of the night. And that's it. We have tried all the makeup trends from fall 2025 and we made it very simple and wearable. From burnt orange eyes to bold lips or to glossy face. We made it very simple and wearable on daily basis. Now you can rock this look on everyday basis without having any glam square. Now you guys comment below and tell me which trend you are more excited to try this fall. And don't forget to like, share and subscribe this channel for more beauty content. Until next time, stay gorgeous and stay healthy. Bye bye.